आगे का PYQs देखते हैं। अजोला क्या है? अजोला इज aquatic fern. ठीक, Azolla is a free floating aquatic fern that thrives in waterlogged condition. It is rich in nitrogen and protein, making it useful both biofertilizer and livestock fodder. ठीक, ये aquatic fern है. Aquatic fern which is used as a biofertilizer, वो कौन सा है? Azolla. Salvina, aquatic fern but does not fix nitrogen. ठीक, Salvina भी aquatic fern. Azolla forms a symbiotic relationship with Anabaena to fix nitrogen in paddy fields. Marsilia, type of water fern, but it lacks nitrogen fixing ability. Pteridium, a terrestrial fern, does not act as a biofertilizer. Azolla contributes to sustainable rice farming and widely used in Southeast Asia, India, and China. The aquatic plant commonly used as biofertilizer in waterlogged rice field. एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड इन वाटर, तो ये अजोला है, एक्वेटिक फर्न है ये. अजोला इज रिच इन नाइट्रोजन एंड एक्ट एज ए ग्रीन मैन्योर इन पैडी फील्ड्स. इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड रिड्यूसेस केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी. अजोला पिन्नाटा कैन फिक्स 20 to 30 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर? तो ये अपना ये माइकोर्जिया, वेस्कुलर एर्बुस्कुलर माइकोर्जिया, VAM. ठीक, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉट फॉस्फेटिक. राइजोबियम forms symbiotic root nodules in legumes but does not solubilize phosphorus. Blue green algae cyanobacteria fix nitrogen but do not solubilize phosphorus. Azolla is used for nitrogen fixation in rice field. Vesicular arbuscular mycorrhiza is a fungal symbiosis that enhances phosphorus uptake. Glomus improves plant growth by 20 to 30% in phosphorus deficient soils. National Biofertilizer Development Center promote WAM based fertilizer for phosphorus deficient soils in India. Cyanobacteria and Azolla are key biofertilizer in paddy cultivation. WAM fungi, Glomus are essential for phosphorus uptake. Biochar enhances soil fertility, retains water, and supports microbial growth. India's NMSA 2014 and ICAR Research 2018 to 2022 promote biofertilizer and biochar use for sustainable agriculture. ठीक, by integrating biofertilizer and biochar, India can reduce chemical dependency and enhance soil health, achieving SDG goal zero hunger by 2030. ठीक, which of the following statement is correct in reference to the compost? Compost के बारे में क्या गलत है? The process of decomposition in pits is slowed down by earthworms. इनकरेक्ट, मतलब अर्थवर्म तो और बढ़ा देते हैं. ठीक, इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स, बिल्कुल सही है. इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सही है. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन फास्ट कर देते हैं बाई earthworms. The waste material decomposed is farm waste material like livestock excreta, vegetable waste, etc. The process of decomposition in pits is slowed down by earthworms. Composting involves the decomposition of biodegradable waste जैसे kitchen waste, farm refuse, leaves in pits. Compost is rich in organic matter and nutrients, improving soil fertility and microbial activity. Earthworm accelerate decomposition in process known as vermicomposting. ठीक, they enhance microbial action and break down organic material faster. Composting involves farm waste like livestock manure, crop refuse, and vegetable waste. ICAR 2020 reports that composting can reduce synthetic fertilizer use by 30 to 40%. Type of composting: vermicomposting, aerobic composting, and anaerobic composting. The capability of nitrogen use efficiency can be increased in crop production by all of the above. Use of split application, use of nitrogen inhibitors, using the slow release of nitrogen फर्टिलाइज़र. मतलब ये तीनों चीज़ों से हम लोग बढ़ा सकते हैं.
Use of split application, applying fertilizers in multiple doses instead of single application reduces nitrogen loss. Use of nitrogen inhibitors, these slow down nitrogen conversions, reducing leaching and volatilization. ठीक. Using slow release of nitrogen fertilizers, slow release fertilizer release nutrients gradually, improving efficiency and reducing environment impact. ठीक. All three methods enhance nitrogen use efficiency, reducing fertilizer waste. Nitrogen fixing bacteria make a combination with cells of the roots of pulses. Rhizobium bacteria form root nodules in legumes. Pulses like chickpeas, beans, peas, alfalfa, fixing atmospheric nitrogen. Rice will use blue-green algae, cyanobacteria, like anabaina, not root nodule bacteria. एजोला जो है इसके साथ वो करता है. Wheat relies on synthetic fertilizer, though Azotobacter can be used as biofertilizer. Sugarcane benefits from nitrogen fixing bacteria like Glucanobacter, but does not have root nodules. Rhizobium bacteria can fix 50 to 200 kg of nitrogen per hectare per year. Which of the following are nitrogen fixing plant? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन है? देखिए अल्फाफा भी है, क्लोवर भी है और पर्सलेन भी है. अल्फाफा, चिकपी, क्लोवर, अल्फाफा, चिकपी और क्लोवर. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन से हैं? अल्फाफा, चिकपी और क्लोवर. ठीक. कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन. नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट amaranth, porcelain, कल्फा, spinach do not fix nitrogen but absorb it from soil. ठीक. Which of the following plant is not useful in nitrogen fixation? ग्राम पी, बीन ये सब करते हैं, पैडी नहीं करता है. ठीक. Gram pea, bean, legumes contain Rhizobium bacteria that fix nitrogen. Paddy feeds reliant fertilizers and blue-green algae like anabaina, but do not have root nodules. ICAR state that rice paddies require nitrogen supplementation for maximum yield. Which bacteria is responsible for nitrogen fixation in soybean? अपना सोयाबीन के लिए राइजोबियम जोपैंसियम. हे भगवान, कितना नाम याद रखे कोई. राइजोबियम जोपैंसियम फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन, हेल्पिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू प्लांट यूजेबल अमोनिया. सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, लिग हीमोग्लोबिन इस अच्छा लेग्यूम हीमोग्लोबिन कहाँ? लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में. लिग हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स दैट रेगुलेट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. बताइए. रेड हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नाइट्रोजन fixation efficiency by 20 to 30%. हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स. ये रेड कलर का वो होता था, वो बैक्टीरिया क्या ले सके? ऑक्सीजन ले सके. विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड प्लफर्स ऑफ द सॉइल? अर्थवर्म आर कॉल्ड प्लफर्स ऑफ द सॉइल बिकॉज दे एरेट एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू burrowing and they decompose organic material, enriching the soil with essential nutrients. FAO estimate that earthworm activity increases soil fertility by 25 to 30%. Wormy composting using earthworms enhance compost quality. ठीक. Rhizobium fixes nitrogen in legumes like chickpea, alfalfa and clover. Azolla and Cyanobacteria, blue-green algae, fix nitrogen in rice paddies. Leg hemoglobin regulate oxygen for nitrogen fixation in legumes.
Biochar improves soil fertility, microbial growth, and water retention. Earthworms enhance soil irrigation and fertility through burrowing and decomposition. Government schemes like NMSF 2014, ICAR 2022 promote biofertilizer adoption of sustainable agriculture. By integrating biofertilizer and organic soil management, India can reduce chemical dependency and achievable sustainability development goals जैसे DG to zero hunger by 2030. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक, अजोला जो है अपने वीट ऊट में रहता है. ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी, ठीक. राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पी में, ठीक. और एजेटोबैक्टर वीट में. एजोला भी वीट में ही रहता है लगभग. ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी, साइनोबैक्टीरिया एनोबेना नोस्टोक ऑस्किलोट्रा फिक्स नाइट्रोजन इन फ्लडेड राइस फील्ड मेकिंग देम द नेचुरल बायोफर्टिलाइजर फॉर पैडी. FAO 2022 report that blue-green algae fix 20 to 30 kg of nitrogen per hectare in rice cultivation. Rhizobium leguminosum P forms root nodules in legumes like peas, fixing atmospheric nitrogen. States that legume crops enhances nitrogen fixation by 50 to 200 kg per hectare per year. Azotobacter wheat. Azotobacter is a free-living nitrogen-fixing bacteria found in soil. While wheat does not have a symbiotic root nodules, Azotobacter enhances nitrogen availability in wheat fields. Azolla maize forms a symbiotic relationship with Anabena, used in paddy fields for nitrogen fixation. Maize does not grow in flooded conditions, so Azolla is not useful for maize cultivation. Maize relies on synthetic fertilizers or Azotobacter based biofertilizers. ICAR 2020 studies confirm that Azolla improves nitrogen fixation in rice fields but is ineffective in maize cultivation. National Biofertilizer Development Center recommends Azotobacter for wheat and Rhizobium for legumes. ठीक. Azolla is mainly used for paddy, not maize. Rest of the matches are scientifically accurate based on nitrogen fixing crop bacteria association. थैंक यू. ये यहाँ हम लोग का ख़त्म हुआ. बाय बाय.